and academics, whatever they have the relation from Islamic seminaries or from other backgrounds, but they are doing their best performance in their respective areas. First of all, I extend my congratulations, my gratitude, my thanks to all the students who have been learning English language and literature in the English department that has been designed for the specific purpose to impart the good, authentic knowledge of learning and science, specifically English language and literature. My dear brothers, it's an undeniable fact that English has been lingua franca of the international communities, international human brethren, international human societies, and it's very clear that English is the language that is going to bridge the gap between the two countries, two communities, two societies with a different background, with a different culture, with a different color, creed and caste. As we have internationally witnessed in the diplomatic field that two countries, whether they are from Asia, from Europe, from Africa, all these countries are coming together on the one platform and they are discussing their problems, their issues, their difficulties, whether they are from political arena or domestic arena or international arena, and they are solving through this very language. And it is giving the clear importance, significance of the language with no doubt in it, with no suspicion in it, with no confusion in it, and it's making it brightly clear that learning this language in this era is very important from the religious viewpoint and from the global viewpoint. And we have been seeing that many Islamic scholars in the early era of independence in India, they desired to know the language just to counteract the questions that are coming from the European think tank. And from among them was Hazrat Nanotwi Rahmatullah alayhi. And his famous story is noted in the authentic books of history. Once upon a time he was traveling by the ship, and one Christian people came closer to him and he asked a few questions about Islam, and he attacked the values, the principles and the foundations on which Islam is standing. At the time, he took one person who was getting bridge between both of them. He was giving the answer, and the one who was his assistant, he was translating what he was saying. But you know, the translation is quite different from the real text that I am saying. When my talk is being translated in any language, it loses the spirit, it loses the shape, it loses the reality, it loses the sincerity, the intention, and the power that hunger. I will try my best to learn this language and give the answer in their very language. But he was a very pious man. He was the leading figure of Islam, that he has founded Darul Deoband, and Darul Deoband is still leading the country in their religious needs and requirements. So Allah Almighty created some of his own graduates. It is no one else but Maulana Asad Madni Rahmatullah alayhi. And his disciple Maulana Badruddin Ajmal Qasim.
Maulana Badruddin al-Qasmi took this movement ahead and he established Markazul Ma'arif Education and Research Center in Delhi. And then this long process came up with fruitful results in the field of learning English language and literature in India. Ulama started learning English language, they started speaking, they started understanding, they started authoring, compiling the books about information, about Islamic queries, about misconceptions and misunderstanding that are being raised by the enemies of Islam, by the hate monger people that they do not like the best teaching of Islam, the wonderful instruction given by the Prophet ﷺ. They have doubts about the life of the Prophet, his biography, his mission and his contribution to the humanity. So I wanted to say, my brothers, that when anybody wants to learn English language or any other language with the purpose of preaching Islam, spreading the message of Islam, it is kind of virtue. It is kind of worship. It is kind of religiosity. It is a kind of charity, I think. For example, if I don't know good Hindi, I will not be able to transfer what the message, what the theme of Islam I have got from the books. We have seen many scholars of Islam, they have good knowledge, they have wisdom, they have power of speech, but they don't have the tool to transmit the thoughts, the knowledge and the information, the inputs that they have gathered from the different types of books. They are not able to transfer from their hearts to others. Why? Because they don't have this very medium to communicate, medium to talk, medium to discuss, medium to make the other people comprehend the message of Islam. So I congratulate all of you for having been selected the August students in this August seminary, and you are acquiring this language under the supervision of the highly qualified teachers. They are dynamic, they are sincere, they are very dedicated, they are very thoughtful of your bright future, of your development, and they want to give you much and more from this side. So what are the rules to succeed in the way to pursue any language? So I have 4 principles. The first one, my brothers, is sincerity. Sincerity is the backbone of any action to flourish, any action to thrive, any action to get acceptance among the community. First thing is sincerity. Sincerity towards your parents, sincerity towards your teachers, sincerity towards your community, sincerity towards your management, and sincerity towards your own future life. My parents have given us a very wonderful opportunity to come here, to sit down, to get knowledge, but if we devalue and if we distract our attention and we should not focus the main goal set by us, or if we are not concentrated as it should be concentrated, it means we are going to fail to achieve our goal. So first of all, sincerity. And second thing is that dedication. Dedication is the leading principle to the success. We have seen the farmer who has a very low aim, doesn't have very high aim, but just he wants to
bring some crops and he wants to see his harvest valuable. He wakes up in the morning. He doesn't sleep in the night. He thinks over and over again the quality of harvesting, the quality of agriculture, the quality of field, and the quality of soil. He sows and he wants to reap. Why? Because he wants to keep his family alive. He wants to earn livelihood. So he is giving his efforts. He is giving his devotion towards his field. Then some grains are coming from the field. He never fails to do his best to produce the good grains from the field. So in contrary to the efforts given by the farmer, we are giving our efforts to brighten our future, our nations, and our community, and we want to brighten the future of the country. So we have to think how much effort we must give, how much effort we should spend in the field of learning, in the field of pursuing education, in the field of enhancing the beauty of the language, the beauty of our tongue, the beauty of our accent, the beauty of our communication skill. We have to give our 100% to what we are learning. So second principle to succeed in the life is dedication. And third one is devotion. Devotion is the third principle, must be given, maintained by the person who wants to be successful in this world. As we have seen, the honey bee. Honey bee is flying over each and every flower and it suckles the juice of the fruits. It digests and then it's produce honey for the human being. So it is going through the long process, suckling, digesting, then producing, and then protecting from the bad weather. You see, the honey bee is always pouring, always circulating around its beehive. It doesn't keep any environmental forces to destroy its efforts. So we should be in the line of devotion. As the worshipper devotes his time, devotes his energy, devotes his mental power, devotes his physical power to be happy, to get the pleasure of Allah, to get the pleasure of God, to get the pleasure of his Creator, the same thing must be given to the study. Even we have to dream in night, in day, in morning and evening that I have a very specific goal. I want to hit it. I want to reach this target. What may be the possible efforts? We should never fail to do it. We should never fail to extend it. So the third thing is devotion. That's very important to get the success. And fourth one is introspection. Introspection means to examine, to assess the stages of the development. Where I was standing a week before and where I am standing now and where I will have to move for the next week. It must be assessed each and every day. My mother is giving sacrifice because of me, because she is holding the utensils, she is washing, she is brooming the house, and she has made me free to learn the language. My father is going to farm lonely, and he has made me free from all the responsibilities, from all the accountabilities, from all the household works, from all the things and requirements that have been fulfilled by myself because of being a member of the family. My father had made me free. So what is my responsibility being in this peaceful environment of learning? So the fourth principle is introspection. We must introspect where we are standing and where we have to move. If a person has this skill to introspect
to assess, to examine the development and the failure, the weak point and the strong points, definitely he will not fail to achieve his goal, his aim and his motto of life. But the person who just is walking, but he never looks back where I was and where I am going. So it means he is wandering in the vast forest with no goal, no aim, no destination. For example, if the train is moving in the track with no vision and with no destination, it means it is a kind of shuttle that is wandering from one place to another, running from pillar to post with no benefit and with no utility for the community. So we have to introspect where we were and where we are standing now. And the best among all these suggestions is the full obedience to the teacher. Full obedience to the teacher. We have to regard our teacher, we have to respect him, we have to value him, we have to give him all possible and all kinds of respects that he deserves. We have to believe in what the teacher says, as our Sahaba did, the companions of the Prophet. They never disobeyed his mentor. And his mentor was none other than the Prophet Muhammad. So the teacher is giving you the best jewel, the best diamond that you can never ever find in the world. The teacher is going to enhance your life. He is going to transform your life. He is going to bring the revolution in your life. So you have to be very grateful to your teacher. Never disobey, never disrespect, never disregard. You always be happy to follow the commandments, the instructions and the guidelines set by the teacher if you want to succeed in your life. No matter what is your position in the family, what is the position of in your community, how wealthy you are and how smart you are, but before teacher you have to sit like a small child. He is sitting before his parents. Then you can succeed in your life. And at the end, you should have set a very high aim, high goal. You try to repeat this sentence again and again to yourself, that I am not a normal man. I want to be very special in the community. I don't want to be mingled in the huge crowd of the people. I want to look like the shining star in the sky. In the sky you see different types of stars are twinkling. But the galaxy, it has its own color, it has its own beauty, it has its own brightness, it has its own charm, it has its own excellence. That is attracting the eyes of the human being to see, to look, to ponder, to think of it. So we have to change our life and we have to be very special, very specific and distinct from others. We should not think that we are the common people. We are Ummah-e-Wasat. Allah Almighty has brought us. Allah Almighty has chosen and selected from the other communities. We have to lead the communities. We have to be the teachers of the communities, whether they are non-Muslims, Christians, Jews, whatever they are. We have been given this duty to teach them. Not to be the students of them, not to be pupils of them. We have been given this opportunity because Allah Almighty has brought this nation, the nation of Ummah-e-Muslimah, to lead whole nation towards the right way, to guide them to the straight path. So the person who is the leader, who should be equipped all the qualities of leadership. So these are the 5 principles
I wanted to impart to us. As far as the language is concerned, you know, language is the name of four principles. Without four principles, you know, we can say the foundations of the language stands on four elements. These are the four elements. Without covering all of them, the language is incomplete. Any language in the world that is being spoken must be focused on four areas. The first one is listening. Listening is very necessary for learning any language. And by the grace of Allah Almighty, the modern discoveries and the modern invention has made all the things very easy for us. Everyone has the world in his hand. World is under the fingerprint. Just he is clicking and the world is before him. America and the European countries where English language is spoken, read, written and used as the official language and as the public language is under the single touch of your finger. Just you have to think, you have to speak before the screen and the information and the input is coming like the bubbles or like the waves of the seas and the oceans. Whatever the information you want, just you have to click there, you have to type what you need and all the information are coming rapidly, instantly, immediately, with no delay in producing the information. So the first thing is that listening. Listening is the backbone of the language. And we have seen you're not able to understand. No problem. Yes, very, very good suggestion. I'm very thankful to you that you give such a suggestion. Because if I am talking English, I think I am addressing the mountain, yes. But just for their encouragement, it was necessary to talk, so that they can get inspiration. That such a Maulana, having cap like us, he has also nose, eyes, and all the organs that we have, also he has. Why he is speaking and why we are not doing this? It was the intention, not the impression, nothing else. Because in the teaching life, the aim of the teacher should not be like that. It is a very low and filthy and mean intention that the person wants to impress anybody. No, nothing. It's not my aim in teaching. तो मैं ये कह रहा था कि लैंग्वेज जबान सीखने के लिए सबसे अहम चीज है लिसनिंग, सुनना। सुनना, छोटे बच्चे हैं, समझ में आए ना आए, वो बोल सकते हो या ना बोल सकते हो, पहला काम है सुनना। हर दिन का ये काम होना चाहिए। सुनने में अलग अलग चीजें, स्टोरी सुने, कॉमेडी सुने अंग्रेजी में, खबरें सुने, और बच्चों के लिए तो वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा मटेरियल्स मौजूद है। उसमें 5-5 मिनट की वीडियो रोजाना, उनकी जो मॉर्निंग असेंबली में शायद होती होगी, असेंबली के अंदर 5 मिनट की वीडियो को लाजिम कराइए, चाहे लिसनिंग के यानी वीडियो की शक्ल में हो, स्क्रीन प्रोजेक्टर के जरिए लगा दिया जाए या किसी और तरीके से। 5 मिनट सुनने का ये बनाए, सिस्टम बनाए, और 5 मिनट के ड्यूरेशन में जो भी फ्रेज और जो भी उसमें कोई वर्ड ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट को किसी डेली लाइफ में कहीं भी वो सेंटेंस या कोई भी फ्रेज काम आ सकता है, तो उस फ्रेज को पॉइंट आउट करके बोर्ड वहाँ लगा, वो बोर्ड पर 4-5 फ्रेज दे दिए जाए और कल पूछ लिया जाए कि कल क्या फ्रेज बताया गया था। तो अगर 5-5 फ्रेज रोजाना याद कर रहा है तो महीने के कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे भाई? 150 भी ना मानिए, 20 को हज़ार कर दीजिए। 20 को डिलीट करके आप देखिए तो कितने हो जाएंगे? 130 हो जाएंगे। उसको भी हज़ार कर दिए, सिर्फ 100 ही मान लीजिए महीने। तो अगर 100 महीने का मानते हैं और पूरे साल में पढ़ाई जो होती है 5-6 महीने होती है कुल पढ़ाई, छुट्टी उट्टी निकाल करके 5-6 महीने पढ़ाई होती है, तो उसमें कितने हो जाएंगे कुल? 600। और 600 वर्ड में ही आदमी बड़ा राइटर होता है। शेक्सपियर के अगर लिटरेचर को देखा जाए और उसके पोएम और प्रोज को देखा जाए तो मुश्किल से 950-800 के करीब पहुंचता है।
उसी में वो लिखता भी है, उसी में अपने ख्यालात का इज़हार करता है। और हर आदमी, मेरे पास भी 7-8 से ज़्यादा अल्फाज नहीं है, उसी में मैं बोल रहा हूँ, उसी में लिख रहा हूँ, उसी में जो कुछ करना है वो करता हूँ। तो पहला काम तो ये है लिसनिंग। स्टूडेंट्स को कहा जाए लिसनिंग के लिए, और लिसनिंग को सिर्फ और सिर्फ यानी एक एंटरटेनमेंट और लुत्फ की चीज़ न बनाई जाए, बल्कि लिसनिंग को बहुत सीरियस लिया जाए। स्टूडेंट्स की आंखों पर और चेहरे पर नजर रखा जाए कि आखिर सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। 5 मिनट सुनवाइए, और कभी कभी जो है रिपीटेशन, जो वोकैबुलरीज हैं, जैसे BBC है, तो BBC में इसका एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, BBC बच्चों के लिए। बट bbclearningenglish.com में बहुत सारे बच्चों के लिए दिया गया है। कुछ अल्फाज रख करके उसका तलफ़ुज़ भी कराया जाए, पहले से मौजूद हो। एक लफ्ज़ तलफ़ुज़ कर रहा है और उसके पीछे सारे बच्चे रिपीट कर रहे हैं, ताकि उस दिन से जो है बच्चों का जो एक्सेंट हो, एक्सेंट सही तरीके से वो बच्चा उसका तलफ़ुज़ करता है। और आमतौर पे इंडिया के जो लोग हैं पढ़ने वाले, उनको ये दिक्कत पैदा होती है, तो वो लिखा कुछ है, पढ़ते कुछ और है। नाइट लिखा हुआ है, कनाइट पढ़ रहा है, रट रहा है। और बिहार में देखो तो वान को पढ़ रहा है, भान बना गाड़ी कर रहा है। वो वजह इसकी है कि वो तवज्जो नहीं दे रहा है। कैपेसिटी तो कपासिटी वो कर रहा है, कपासिटी, और उसको सही समझ के रखना है। इसलिए पहली तवज्जो हमारी ये होनी चाहिए कि लिसनिंग के ऊपर उसके तवज्जो जहाँ तक लिसनिंग कई तरह का कराया जाए। कभी जो है स्क्रीन पर भी आप कोशिश ये करें कि ऐसी वीडियो हम लोड करें जिस वीडियो के अंदर सबटाइटल भी मौजूद हो। और अगर हो सके उसको और ज़्यादा सिस्टमेटिक करना है, तो एक दिन पहले सबटाइटल जो दिया जा रहा है, सबटाइटल उसकी रीडिंग क्लास में एक मतलब करा दिया जाए। इसको हम एक एजुकेशन का और स्टडी का हम पार्ट समझें। छोटे छोटे पुर्जे बच्चों के तकसीम कर दिए जाएँ और वो सबटाइटल फिर दोबारा चलाया जाए वहाँ पर। एक तो हम रीडिंग करा चुके हैं, और एक वहाँ पर जब वो फॉलो करेगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो बहुत जल्दी उसको ग्रास्प कर पाएगा, बहुत जल्दी ज़बान को ले पाएगा। तो पहला तो यह है कि लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। और लिसनिंग में मैंने कहा कि कई तरह का, हर दिन एक उस्ताद का कम से कम 2 मिनट का ही बयान है अंग्रेज़ी की अहमियत पर, किसी न किसी अंदाज से। कम बच्चा कान में उसके अल्फाज पढ़े, कान में आवाज़ पढ़नी ही चाहिए। केरल मैंने पढ़ाया तो वहाँ देखा कि न तो ज़बान समझे न मैं उनकी ज़बान समझा, वो वर्लम पढ़लम कर रहा, कुछ पता नहीं क्या होगा। बस तो पढ़ाना है उनको, मुझे उनकी सतह पर उतरना पड़ता था, उसको सुनना पड़ता था, उनको समझना पड़ता क्या बोल रहे हैं। इशारे में जाकर बताता था तालिब कि ये, तो अब मुझे उसको बताना है कि वॉल है ये, इस वॉल। तो पहली चीज़ तो है कि हम बच्चों को सुनने का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम कराएं। बच्चे भी सुने, इतना शौक पैदा हो जाए उसको अंग्रेज़ी का, क्योंकि बगैर इसका कोई चारे का इसको तो सीखना ही पड़ेगा, बगैर सीखने तो जो है हमारी ज़िंदगी। तो लिसनिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल टू लर्न टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज। ये बहुत अहम है सबके लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ज़रूरी है लिसनिंग। माशाअल्लाह। तो लिसनिंग का आप जो है बहुत ज़्यादा, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। पहला तो है लिसनिंग। दूसरा है रीडिंग। रीडिंग में हम जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रीडिंग हमारी कम से कम इतनी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए कि जब भी हम किसी बच्चे को दें रीडिंग करने के लिए कुछ, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो ना हो, ट्रांसलेशन कर पाए ना कर पाए, रीडिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जब दिया जाए तो उससे घबराहट कुछ होना। और उसके लिए ये है कि दर्जों में तमाम बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए। एक होशियार बच्चे को या 4-5 बच्चे जो होशियार होते हैं क्लास में, अच्छी तरह से उनकी रीडिंग कराई जाए, ग्रुप में फॉर्म उसको बांट दिया जाए। हर 4-5 पर एक टीचर मौजूद रहे, तुम रीड करो 5 मरतबा और आप सुनते रहे। बस आपका काम है घूमना सीख दर्जा का नाम ही मस्ती करने का, मस्ती का अंदाज होना चाहिए। बात टीचर बहुत प्रेशर में होते हैं, डंडे भी बजा रहे हैं साहब, भाग भी रहे, चीख भी रहे, तब भी रिजल्ट आ ही नहीं पा रहा है। नहीं, मस्ती में उसका लुत्फ लेकर, इंटरटेनमेंट, ये गोया कि आप मज़ा ले रहे हैं। मज़ा लेने का एक वक्त आया है उनके साथ, और उसका तरीका ये है कि 5 मरतबा। उसके बाद दर्जे के अंदर आप एक रखिए, एक अलग कुर्सी रखिए, 2 कुर्सी, एक हम बैठते हैं उसके ऊपर, या कोई टेबल हो जिसके ऊपर बच्चा खड़ा हो सके सही से, उस पर खड़ा कराइए उसको। वहाँ पे खड़े हो तो पढ़ो, तमाम बच्चे और से सुने। कभी किसी को बुला दिया, आप तुम आ जाओ, कोई भी आ जाओ। रीडिंग बहुत ही पावरफुल है। एक तो रीडिंग के अंदर 2 बातों का ख्याल रहे, लफ्ज़ तलफ़ुज़ जो है बिल्कुल, प्रोनाउंसिएशन जो है बिल्कुल क्लियर है, और जो सेंटेंस की कनेक्टिविटी है, कहाँ पर पॉज करना है, कहाँ पर जो इंटोनेशन होना चाहिए, कहाँ पर राइज एंड फॉल होना चाहिए, अप्स एंड डाउन्स वॉइस के अंदर, इन तमाम को भी से मेंटेन कीजिए बच्चों के साथ।
और हम अपने स्कूलों को कभी भी किसी हिंदू स्कूल से, ये बहुत आम चीज़ है, इसको सुनने की जरूरत है, किसी हिंदू स्कूल से या किसी ब्राह्मण के स्कूल से या किसी जैन के स्कूल से अपने स्कूलों को कभी भी हथिया ना सकते। हमारा मिजाज बना हुआ है कि दूर वेरी में पढ़ाई अच्छी होती है और दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। भाई उनके अच्छी तो हमारे क्यों अच्छी नहीं हो रही? हमेशा हम अपना हुनर होते हैं, हमारे पास जो है रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास जो है मैनेजमेंट सही नहीं है। नहीं, आप खुद अपने आप पढ़ाइए, एजुकेशन में इतना पावरफुल बनिए और ये समझिए कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके अंदर कुछ ना कुछ नया मुझे करना है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप अगर इसको बहुत सीरियस लें तो इन्हें खराब बनाए। जिस सब्जेक्ट का जो टीचर है वो ये सोचे कि मुझे फुल देना है अपनी कम्युनिटी को, ये नहीं कि जितनी सैलरी मिल रही है उतना पढ़ाएंगे, नहीं तो बहुत हमारी नीच नहीं सोची जाएगी। सैलरी की कमी को बर्दाश्त करके आप कम्युनिटी पर फोकस कीजिए। अगर कम्युनिटी पर फोकस आप कर रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम ने यानी प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर बाद में जब छोड़ा हो तो उससे पूछा गया कि सबसे बेहतरीन चीज आपका पेशा क्या होगा, क्या करना चाहेंगे आप इतने बड़े ओहदे पर? इसके बाद कोई ओहदा ही नहीं हिंदुस्तान में। उसने कहा कि अगर जब मैं प्रेसिडेंट का जो ओहदा छोड़ दूंगा तो मेरा सबसे बेहतर जो मशवरा मेरा होगा, प्रोफेशन जो होगा वो टीचिंग होगा। प्रणब मुखर्जी को भी देखा होगा, वही प्रेसिडेंट था वो जब जैसे रिटायर हुआ उससे वो चला गया कहाँ, फिर जाके हिस्ट्री का टीचर बन गया, पॉलिटिक्स का, और जा करके वो फिर पढ़ाना शुरू कर। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि एक आम टीचर पढ़ाता है। तो टीचिंग जो है ये बहुत मुआज़्ज़ज़ पेशा है। इसके लिए हम ये करें कि अपने स्कूलों को या अपने बच्चों को किसी ब्राह्मण के बच्चे से तकाबुल कभी न करें। ब्राह्मण का बच्चा या किसी का बच्चा मुस्लिम बच्चे के साथ टिक ही नहीं सकता है अगर सही से उसको रोक देती है, मुमकिन नहीं है। और इसकी मिसालें बहुत सारी देखने में को मिल रही। एक पंचर बनाने वाले का बेटा और साहब एक सब्जी फरोश का बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा जिसके पास ना पैसे हैं ना कुछ है, लेकिन जब उसने ठान लिया और जब आज़्म कर लिया, डिटर्मिनेशन, आज़्म जब पुख्ता उसका हो गया तो उसने यूपीएससी निकाल करके दिखा दिया। और यूपीएससी में जो आलम नंबर थे वसाइल नहीं है उसके पास, उसके बावजूद चूंकि उसने अपने आप को समझा कि हाँ मैं कर सकता, आई कैन डू इट, मेरे अंदर कुव्वत है, कैपेसिटी है, मैं इसको कर सकता। अगर ये है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर पहले से ही हम समझ रहे हैं कि नहीं भाई ये हमारा जो स्कूल है, बच्चों को भी तो ये जरूरी है समझना, अपने स्कूल को दुनिया के तमाम स्कूलों में सबसे ऑक्सफोर्ड से ज़्यादा आरा समझा। मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ ये ऑक्सफोर्ड से अच्छा है, मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ मेरे टीचर इस ऑक्सफोर्ड के टीचर से अच्छे हैं। ये तस्वीर बनाने की जरूरत है। ये ख्याल और ये फिक्र दिमागों के अंदर एक वायरस की तरह है, ये इंसान के दिमाग को खोखला कर रहा है। हमेशा ये ख्याल आता रहता है मेरा स्कूल इस्लामिक स्कूल है, इसमें कहाँ पढ़ाई शुरू हुई। ये दिमागों के अंदर जो बैठा हुआ है खुमार, इस दूसरे के स्कूलों को तो हम खूब सराहते हैं, दूसरे के स्कूलों की तो खूब तारीफ करते हैं, लेकिन अपने स्कूल की तारीफ कभी जबान से नहीं होती। हमेशा ये कहता है कहाँ कहाँ पढ़ाई होती है। इस्लामिक स्कूल का मतलब है कि यहाँ पढ़ाई नहीं। दिमाग के अंदर जो खुमार है इसको आपको सबको मिलकर के बदलना है। रिजल्ट आपका एग्जाम में इतना अच्छा है कि आपके स्कूल की तरफ लोगों का रुझान। क्या बात है कि इसके बच्चे हर जगह स्कूल में यही नाम आ रहा है। तो टीचर्स भी अपने आप को समझे कि मैं ऑक्सफोर्ड के टीचर से कम नहीं, और स्टूडेंट्स भी समझे कि मैं ऑक्सफोर्ड के टीचर से के स्टूडेंट से कहीं भी किसी के एतबार से कम नहीं। तो पहला तो ये है कि इदारे के नाम को ऊंचा करने के लिए हमें पूरा आज़म करना है। मैं अपना पूरा 100% दूंगा। माँ बाप ने मुझको इसीलिए भेजा है, मुझे इसीलिए यहाँ पर रखा है, मुझे पूरा फुल देना है। और टीचर्स को भी की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को कुछ ऐसे जो बिल्कुल बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी निकाल रखी है, उन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है, उनको एक वीडियो भी कभी कभी मैंने सबने भी दिखाएं। देखो ये छोटा बच्चा है कैसा पंचर बनाने वाले का बेटा, और देखो आज ये कितने बड़े ओहदे पर फायज है, इसकी सैलरी भी अच्छी है और उसका काम भी अच्छा है और कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम भी कर रहा है। तुम भी बनना चाहते हो, बनना चाहते हो तो मैं बताऊँ, मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है बच्चे। शुरू में अगर हमने मोटिवेट कर दिया अच्छी तरह से तो फिर वो भागता चलेगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मोटिवेट करना बहुत जरूरी, मोटिवेशन। तो एक तो पहली बात ये है कि हमारा जो रीडिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। रीडिंग हर सेंटेंस का इतना अच्छा बच्चा करे जैसा कि बीबीसी से हुआ है को खबर आ रही है, और ये रीडिंग वहाँ पर जाहिर होगी जब लिसनिंग करके सही से आया होगा। दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं कि इनके एक दूसरे को समझदार नहीं किया जा सकता। जब ये दो हो गया अब नंबर आता है स्पीकिंग का। स्पीकिंग शुरू दिन से ही अपने बच्चों को स्पीकिंग पर लाइए। स्पीकिंग के लिए कोई टाइम नहीं,
अभी हम यहाँ करके देखते हैं कौन बच्चा है वो उनका, और वो भी भले कौन है सबसे कम दर्जे के जो स्टूडेंट उसको उठाइए, किसी भी स्टूडेंट को 2 को उठाइए, उठो कौन है? हाँ ये इसके साथ देखो, ये 2 बच्चे हमारे आगे पानी दो। है कलम जो है लगता है इसमें कुछ रचनाएगा मसला है क्या? इसमें खत्म है। आप सब लोग खड़े ना हो, सब लोग खड़े ना हो, एक आदमी को करने दीजिए। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा तो मेरी तरफ देखो दोनों। हाँ मैंने बोर्ड पर लिखा इज दिस अ बॉय, क्या लिखा? इज दिस अ बॉय। तो इस तालिब को बोलना है यस दिस इज अ बॉय। क्या बोलना है? बोलो शुरू करो। इज दिस अ बॉय? यहाँ पे उधर आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे इन बच्चों को भी जब खड़ा करें टीचर्स, तो यहाँ पर वो अपना हमारा इतना दबदबा और रोक ना हो कि इनकी हालत खराब हो पहले से, तो क्या हजरत अभी पेशाब लग रहा है मैं आ रहा हूँ करके, ऐसा ना हो। माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा उसको पहले से जो प्रेशर है पूरा, उस प्रेशर को दूर करना बहुत जरूरी है। तो बुलाते ही है ना उसके दिमाग पर सवार हो गया, अब मालूम नहीं क्या होगा। ये तासुर आ रहा है उसको खत्म करें पहले, फ्रेंडली उसको ये करें। बिल्कुल टीचिंग का काम ही है, टीचर आसान नहीं है टीचर बनना। बेस्ट टीचर बनने के लिए आपको बहुत झुकना पड़ता है, तब जाकर के वो तालिब वहाँ से सोचता है कि उस्ताद का पैर अगर चूमने की इजाजत तो मैं चूम लेता हूँ, तब होता है ऐसा। हमने देखा विकास को, विकास एक जो है यूपीएससी का टीचर, बहुत लाजवाब टीचर। जब वो चले तो उसके पीछे से आप कोई हाथ चूम रहा है तो कोई पैर चूम रहा है, क्या चीज चुमा रहे हैं? बड़े बड़े लोग आईएएस ऑफिसर चूमते हुए दिखा क्योंकि उसने दिया है। मैंने लिखा ये इज दिस और उसके बाद बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा? बुक। क्या माना हुआ इसका? क्या यह एक किताब है? क्या ये पुस्तक है, बुक है? अब आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया? यस दिस इज अ बुक। हो गया। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन करना है। ये जैसे इज दिस अ, यहाँ पर जो लफ्ज याद है आपको, जो वर्ड याद है पहले से, क्या क्या याद है अंग्रेजी में? पेन और रेलवे स्टेशन और ट्रेन और क्या है? बाइक और क्या है? स्कूल और क्या है? कॉलेज और क्या है? यूनिवर्सिटी और क्या याद है? बस स्टैंड, होटल, टैक्सी, हॉस्पिटल। मान यार कितना याद है ना? अब इसमें सवाल करना है क्वेश्चन, और जो सवाल आएगा, जो वर्ड आएगा वहां पर बस ऐसे करना है। यस दिस इज अ बुक। बुक को हटा करके जो वर्ड इधर आया हुआ होगा वो वर्ड लगाना है। शुरू करो भाई, शुरू करो। इज दिस अ कॉलेज? हाँ जोर से बोलो, जोर से, वहां तक आवाज पहुंचे। ये देखिए स्टूडेंट के यहाँ पर बड़ी मुसीबत है, ये जो तालिब दोनों बहुत हल्का बोल रहा है, तो इसका इलाज है, इसको आप बैठ पहुंचाएंगे कोने में। चलो कोने में, चलो कोने में, तहरीक बहुत जरूरी है। अब बोलो वहां से, हाँ बोलो वहां से। हाँ चलो शुरू करो, चलते रहो जल्दी से। हाँ यस यस दिस इज। एक मिनट, यस में हो गया जुमला, ये हुआ कि स्पोकन हमारा शुरू हो गया यहाँ से। पहले दिन से ही काम शुरू होना चाहिए, ये नहीं कि कल करेंगे, शैतान बहुत भाग आता है। अब इसको करना है ऐसे, क्या हो गया? बदल गया। इसको मार्क कर देंगे ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में फिरे भी ये कहाँ पे आ रहा है। ऐसे लिखा हुआ है नो दिस इज नॉट अ बुक। अब यहाँ बुक को यहाँ हटाते रहना है, इसको चेंज करना है। चलो शुरू करो, चलो फिर से सवाल करो।
दूसरे अल्फाज लाओ, बिल्कुल आसान, होटल हॉस्पिटल ये सब लाओ। हाँ, नो 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 दिस इज, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, पहले गौर से देखो, नो नो दिस इज नॉट अ, इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो, पूरा 5 मिनट रिपीट करो इसको। नॉट अ हॉस्पिटल, रिपीट करो। ये इसको हटाओ, हटाओ, हॉस्पिटल लगाओ, बोलो हॉस्पिटल लगाओ, फिर नो दिस इज नॉट अ टीचर लगाओ, और लगाओ, कुछ और वर्ड बताओ। देखो 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 देखो, वहां पे देखो, क्या, चलो लगाते रहो, ऐसे ही बोलो, बस अब बोलना बंद करो। आंख से तस्वीर लो, कैसे लिखा हुआ है, और से देखो कैसे लिखा हुआ है, खूब अच्छी तरह तस्वीर लो। आंख बंद करके ऐसे कहा जाए बोलो तो तुम कह सको नो दिस इज नॉट, ऐसे बोल सको। अब उधर चलो, देखो उसको, शुरू करो, चलो अब सवाल दो। हाँ, अब करेगा, बहुत बेहतरीन करेगा। No, this is not a teacher. बहुत खूब, चलो। हाँ, इज दिस एन एलिफेंट? 1 मिनट, ए ई आई ओ और यू, ये वॉवेल है। ये अगर कोई भी लफ्ज है जिसके पहले ये आ रहा है और पढ़ा जा रहा है, इसे पढ़ा जाना चाहिए, तो एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। अभी से मत पूछो सवाल, इसमें से कोई भी मत लाओ लो अभी अभी, चलो ऐसे ही बोलो जिसमें ये सब ना आए। चलो, No, is this not a teacher? नो, No, this is हाँ, this is a dog. No, this is not a dog. बस अब तुम पूछो इधर से, क्वेश्चन तुम करो उधर। This is a pen. Is this a pen? This is a pen. Is this a pen? Is this a teacher? Is this a cat? हम्म हम्म Is this a what? Is this a फ्लावर। 1 मिनट हो गया ये। अभी सेंटेंस आ रहे हैं बहुत छोटे छोटे, ये सब कुछ नहीं करना है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये सब भारी भरकम नहीं देना है उस बच्चे को, डायरेक्ट इसको स्ट्रक्चर फैलाना है। उसके बाद ये सेंटेंस और बड़ा हो गया। पूछा किसी ने इज दिस अ बुक, तो मैंने कहा, क्या कहा? नो, दिस इज नॉट अ बुक बट दिस इज अ कैट। बड़ा हो गया थोड़ा सा। नो, दिस इज नॉट अ कैट बट दिस इज अ, यानी अपना कुछ लगाना है। जो बात उसने कही है, उसकी बात को पहले रिपीट करना है नोट के साथ, और दूसरी मर्तबा में अपनी बात लानी है।